नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। लास्ट वीक का आनंद का और मेरा जो वीडियो था, दैट वाज आल्सो आवर व्यू अबाउट हाउ टू अप्रोच द बजट स्विंग्स। बट आज मैं एक ज्यादा फोकस्ड एनालिसिस लेकर आया हूँ। दिस इज प्योरली फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑफ द यूनियन बजट, कि उस दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। वो एक लार्जर पिक्चर है, जिसका भी थोड़ा मैं शेयर करूंगा व्हाट आई थिंक। बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन दैट डे, एंड हम उस दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट? सो fasten your seat belts. It is going to be a very interesting numerical and statistical ride. एज यूजुअल ये रहा निफ्टी का बिग पिक्चर। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज बताया था कि ईयरली ओपनिंग, हर साल का जो ईयरली ओपनिंग होता है वो लेवल important होता है to decide on whether to be on the bullish side or the bearish side. So इस साल का opening was around 18,131, this pink dotted line. और जब तक मार्केट उसके ऊपर था it was bullish, and जब से उसके नीचे आया है, if you notice, it is trying to break through, right? एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4, it tried for 4 weeks, so that's a full month. फिफ्थ वीक में सरेंडर कर लिया मार्केट ने, इस लेवल को pierce नहीं कर पाए, नीचे आ गया है। So that's the most important thing to remember, कि for the year, if the market has to be bullish, it has to go above this level of 18,131. Coming to the wave count, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है उनको याद होगा, मैंने दो अल्टरनेटिव्स की बात करी थी कि assuming from the bottom, the corona bottom of 2020, if this is somewhere either 1, 2, 3, or maybe this is wave 1, 2 and 3, तो क्या ये वेव 4 था, ये पूरा कॉम्प्लेक्स करेक्शन, एंड फिफ्थ वेव खत्म हो गया है? ये एक तरीका है देखने का। The other way to look at it is that this is just an A wave, a big wave A, right? And this thing is wave B, जो थोड़ा सा एक्सीड कर गया है स्टॉप को, so it's an irregular flat, which means wave C down should be longer than wave A. ये एक possibility है. Of course, the ultra bullish possibility that a lot of Elliott Wave followers are looking at is that this whole thing is an impulse wave. तो यहाँ पे एक 1 लगा दिया, ये इसको 2 मान रहे हैं, एंड इसको एक और 1 मान रहे हैं, क्योंकि ये impulse wave दिखता है 1, 2, 3, 4, 5. So if this is an impulse wave, what if this is one of a larger wave 3, and we are now going down in 2 of larger wave 3, right? So ये एक अल्ट्रा बुलिश काउंट है। मैं भी प्रेफर नहीं करूंगा उस काउंट को until the evidence emerges. I will look at the market in that manner if we go above 131 and close there. Coming to the daily scale of the market, again ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये राइजिंग चैनल ब्रेक हो चुका है convincingly. उसके बाद काफी दिन it tried to go back, but it really couldn't do much. Again देखिए 18131 को टकरा के नीचे आ गया है. A lot of people were betting on the fact that this is going to be a double bottom,
then they said यहाँ ट्रिपल बॉटम. एंड अगर आपको याद हो, उस दिन आनंद के साथ वीडियो में मैंने कहा था कि ये लेवल शायद गैप के साथ जाएगा, बट गैप के साथ तो नहीं गया है, बट विद इन इंट्राडे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ ये ब्रीच हुआ है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स आल्सो, राइट. इतना छोटा सा गैप डाउन हुआ था, बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ली कैंडल. तो सिंपल प्राइस टेक्निकल्स देखें तो डेली लेवल पे 40 एंड 20 डीएमए दोनों के नीचे बंद हुआ है प्राइस. इनफैक्ट 100 डीएमए के नीचे भी बंद हुआ है. 200 डीएमए इज करंटली एट 17,290. क्या वहां तक जा सकता है? वीकली में 40 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है. 20 वीक मूविंग एवरेज 17,282. So I'll show you another chart. Yeah. ये भी निफ्टी का ही चार्ट है, वीकली चार्ट. इसमें मैंने एक चीज लगाया है, बोलिंजर बैंड्स. ये जो ब्लू बैंड्स दिख रहे हैं, ये बोलिंजर बैंड्स हैं. एंड दिस इज वीकली स्केल करंटली, राइट. वीकली स्केल पे अगर आप देखोगे तो हम मिड बोलिंजर को पियर्स करके नीचे बंद हो गए, राइट. तो टेक्निकली ऑन अ वीकली स्केल market can head down to the lower Bollinger, which is currently at around 16,986. तो 17,000 के लेवल पर. दूसरी बात यह है कि ये जो राइजिंग चैनल है कोरोना बॉटम से, इस राइजिंग चैनल का जो लोअर पॉइंट है वो भी करीब करीब 17,000 और 17,200 के बीच में है. एज्यूमिंग कि ये थोड़ा टाइम लगाएगा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, तो अराउंड 17,250 के आसपास ये चैनल बॉटम है. सो दिस चैनल बॉटम, लोअर बुलिंजर बैंड, and also the 40-week moving average, which is around 17,250, right. ये सारे कोइंसाइड कर रहे हैं, मीटिंग पॉइंट्स ही हैं सब, 50 पॉइंट ऊपर नीचे. The other important thing, and this is something that I'm just learning right now, which is GAN levels, right. GANN. अगर आपने सुना नहीं तो आप गूगल करके देख सकते हैं. GANN. ये एक अलग साइंस है टोटली फ्रॉम एलियट वेव्स. बट इसमें एक चीज है, दे कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड स्क्वायर ऑफ प्राइस लेवल. लाइक देयर विल बी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वैसे. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 9, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गैन थियरी. तो उसके हिसाब से स्क्वायर ऑफ 9 लेवल्स ये ब्लू लाइंस है, राइट. तो यू विल सी कि जब मार्केट ने 18,800 से रिवर्स किया, it came and it spent some time on this level 18,293, राइट. इसको आप अगर डेली स्केल पे जाते हैं तो ज्यादा क्लियरली दिखेगा, राइट. आप देखोगे कि यहाँ से बाउंस मिला, फिर पियर्स हो गया, then it came down and it reacted exactly from the next GAN square of 9 level, which is around 17,896. 17,896, 18,293, इन दोनों के बीच में फिर एक्शन चला, राइट. एंटायर फ्रस्ट्रेटिंग फेज जो पूरा दिसंबर खा गया था हमारा, दिसंबर एंड जनवरी इनफैक्ट, सॉरी, जनवरी. This was all the dance happening just between these two square of 9 levels. And then when it came down again, it looked like it will hold support, but ये pierce कर गया है. इसका जो अगला लेवल है वो 17,227, 17,227.
See how beautifully it again coincides with 40 DMA, the bottom of the rising channel, and slightly away, but very much near the lower Bollinger Band on weekly scale. डेली स्केल पे जाके देखें तो आपको और ज्यादा क्लियरली दिखेगा। सो कहने का मतलब ये है कि whether we look at it in from the perspective of Elliott wave, or we plot Bollinger bands or Gann square of 9, weekly moving averages, trend channel, everything points to some level of convergence around 17,200 to 300 level. तो मार्केट वहां तक जरूर जा सकता है। अच्छा, इसमें बड़ा सवाल ये होगा कि कब जाएगा। So we have 2 trading days before the union budget, which will be out on February of 1st of February. So we have a Monday, which is 30th, and Tuesday, which is 31st. 2 days is more than enough for this to, drop to that level. उसके बाद क्या होगा? यहाँ से सपोर्ट मिलके ऊपर चलेंगे और will we crash through this level? That's a question to which we don't have answers right away. But let me take you to the statistical analysis which I was talking about around budget day. ये मैंने एक सिंपल सा शीट बनाया है looking at all the union budgets since the year 2000. तो इसमें ना कई साल यहाँ 2004, 5, 9, 10, 14, 15 and 1920 इन सालों में they had this whole thing of an interim budget and a final budget. Barring that, if you see, most of the budgets were in the month of February, right? अभी 1st February को होता है, 2017-18 से शुरू हुआ ये। उससे पहले end of February होता था, last day of February होता था. Sometimes it was on 28th, sometimes on 29th. There were some anomalies कभी-कभी, यहाँ पे 25th Feb को था, यहाँ 10th जुलाई को भी था, ठीक है। Anyway, कुल मिलाकर ये है कि मैंने ये एनालाइज करने की कोशिश की है कि बजट डे के दिन किस टाइप का प्राइस मूवमेंट होता है। सो आई हैव प्लॉटेड ओपन, हाई, लो एंड क्लोज ऑफ द डे। सो दिस इज द पॉइंट्स रेंज ऑन बजट डे, ठीक है। दिस बाय इटसेल्फ विल नॉट टेल यू द द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ द डे, तो मैंने उसको परसेंटेज में काउंट कर दिया है, राइट। तो आप देखोगे कि आई थिंक द लीस्ट वाज अराउंड 0.7%। इनफैक्ट इसको हम मैं भी सॉर्ट करके भी दिखाऊंगा। 0.7% was the least range which came in 2014, and the highest range was 8.8%, which was the year 2000 2001। मतलब 1% से लेकर 9% का मूव बजट के दिन आ चुका है। एवरेज ऑफ ऑल दीज इयर्स इज अराउंड 3.4%, ठीक है। The other most important thing to notice is how was the closing on that day, ठीक है। स्विंग तो बहुत बड़ा रेंज हुआ है, कई बार 8% भी हुआ है, कई बार 1% भी हुआ है। Average being 3.5%. 3.5%, index moving in a single day is actually quite a lot. So a lot of traders will lose their pants on that day. More importantly, what I wanted to know was, चलो उस दिन के बजट के लोएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर मार्केट बंद हुआ है, ठीक है। सो ये वो वेरिएंस है, and you will see that the average of all these years is about 1.35%.
मतलब बजट के दिन जो भी लो लगे 1 से 1.5% ऊपर मार्केट बंद हो जाता है. And there were years when the range was 4.5%, right? Even here, ये सब हुआ है. इसी चीज में मैंने क्या किया कि ये जो जुलाई वाले बजट्स हैं, इनको मैंने डिलीट करके एक और शीट बनाया है, where all the budgets are of February only. Okay, why I did this, you will come to know when I share my next sheet. तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो रेंज, एवरेज रेंज ऑफ ऑल दीज इयर्स, राइट, ये अप्रोक्सीमेटली 22 बजट्स, तो 22 साल बजट के दिन 2.65% मार्केट मूव था एक दिन में, which is also quite big, and the market closed about 1.25% from above the low of the budget day, right? If we take all years into consideration, it is 1.35. If we take only February, it's 1.25. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता कि बजट के दिन की हाँ अब लो लग गया है, राइट? यू डोंट नो, उसके बाद और भी नीचे जा सकता है. उसके लिए you will have to keep in mind all these points that I shared just before this, which is rising channel, उसका bottom कहाँ था, moving averages, 40 week moving average, Bollinger Bands. I also talked about Gann square of 9 levels. ठीक है, आप वो सब कहीं पे आप लिख के रख लो नोटपैड पे. And if the market is anywhere close to those levels, 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, we can take a bet. And we can expect at least a 1% rise from there for the index. So if we are playing options, that 1% move can give us, you know, even 4x, 5x, even 10x, depending on how fast the move happens, right? Which brings me to the next chart. ये शीट आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहले भी देखा होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था एक बार, एंड देयर वाज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो आई मेड इन द अक्टूबर ऑफ 2021 about seasonality of index. इसका सिंपल मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जनवरी महीने में जो हाई लगता है हर साल, उसके बाद मार्केट चाहे उससे भी ऊपर जाए या ना जाए, फरवरी में एक नया लो जरूर बनाता है. ठीक है, अभी तो हम जनवरी एंड में है, एंड आवर मार्केट्स आर ऑलरेडी डाउन फ्रॉम 18,800 टू 17,400 अप्रोक्सीमेटली, राइट? फरवरी फर्स्ट को बजट है, ठीक है, एंड हियर आई एम डिस्कसिंग कि फरवरी में एक लो लगता है. नाउ क्या वो लो बजट के दिन लगेगा या बाद में लगेगा, मुझे नहीं पता, बट दैट इज an analysis that you guys can do. It will be very interesting exercise for you people कि आप देखो पिछले 10-15 साल में जो फरवरी का अल्टीमेट लो लगा था, क्या वो बजट के बाद लगा या बजट के दिन ही लग गया, वो आप देखो. But the point is, from the high of January of every year, there is an average of 9% correction that happens in the market. 9%. Okay. Now, अभी तक हमारे मार्केट में जो करेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? लेट मी चेक व्हाट वाज द लो यस्टरडे. 17,493 approximately. 17,493. तो अभी 4% करेक्शन, ठीक है. जरूरी नहीं है कि और करेक्शन हो, बट इफ वी टेक दैट लेवल ऑफ you know Gann square of 9,
40 DMA, lower Bollinger वगैरह वगैरह, that comes to around 17,250, right? So January high of 18,250 say 17,050, around 1,000 points. That will make it a 5% drop. So technically, there is a possibility that in the next 2 days and by the day of the budget or on the day of the budget, we can see this level of 17,250. Taking into consideration all the evidence that I've shown you, statistical, past data, plus price levels, Elliott wave, trend channels, moving averages, and gap levels, and Bollinger bands. So keeping all this in mind, अगर बजट के दिन अगर कहीं पर भी आपको इसके आसपास 17,250 के आसपास निफ्टी दिखता है, तो you know what to do. I hope you've enjoyed this presentation of mine. Please do comment, and on the day of the budget, once you've done your trades, please do share what you have done based on the study that I shared. बहुत अच्छा लगेगा मुझे और आनंद को अगर आप लोगों ने शेयर किया हमारे साथ कि how this video helped you guys on a very important day like the budget day. Thank you, and see you all on the next video.